Recording in progress. Again, a very good afternoon, everyone. Let's start the class. So today we will discuss increment, decrement operator. Now we have learned the other operators like we know that we can write A equal to A plus B. The same thing we can write it as A plus equal to B, and the same thing we can write as plus A or A plus plus. Okay. Now from this increment operator, this one, this is the first test. Okay, why? As it uses a single machine instruction. Now, what is that machine instruction that it uses? That is INR. Okay, this is for increment, and DCR A, this is for decrement. Okay, now the question is, what is the difference between this pre and post? Is there any difference at all, first of all? Well, before that, let's first solve one or two codes and try to find the output of this. Then we will see. Say I'm writing for I equal to 0, I less than 10, I plus plus. In between these two, tell me what is the output? Machines actually, MC one a machine. What is the output of this? In pre, first increment takes place, then execution. In post, first execution, then increment or decrement. So in this context, can you tell me the output for this 1 and 2? Now, two categories of answers, with three categories of answers basically I'm getting. One major group is telling that 0 to 9 for both, and one more group is telling that it is 0 to 9 for the first one, 1 to 9 for the second one. Another group is telling 0 to 9 for the first one, 1 to 10 for the second one. Okay. Now, you all will answer this. Before that, let's discuss first what is the difference between the pre and post operation. Guys, times and again when I'm telling you the transcription I will not allow. Why you are requesting? Now we say pre and post. So this is pre. हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं
same will be decrement. Similarly, it will work. Okay, pre-increment. Now this one is post-increment. Okay. These two we will be discussing. Now, in this context, we'll be taking one example first. The example that we will be taking is int x, comma, y equal to 10. Okay. Now, in case of pre-incrementation, the rule says first is incrementation, second is utilization. Okay. Now, when in case of post increment, first is utilization, second is incrementation. Okay. ध्यान से सुनो. I will not repeat it many times. Okay. Now let's take example to illustrate this. Suppose the example that I'm taking is x equal to plus plus y. This is the first instruction that we have. Okay, and similarly this side we have x equal to y plus plus. Okay. Achha. So now as there are two variables here, we must show two variables, and we will also see what are the codes those are going to get generated for this. Okay. Now now let me create two variables here. So we have one x, we have one y, and we understand how assignment is done using the CPU register. So this is the register. ठीक. Similarly, इस तरह भी लेंगे. This is x, this is y, and this is the register. So this is the variable x, this is the variable y, this is the register number 1. And this is again the variable x, variable y, and this is register number 1. What is the initial value of y they have given? That is 10. Initial value of y given is 10. Okay. Now see, when we create or when we generate the statements, okay, when we generate the statements for this, x equal to plus plus y. Now tell me, what are the various operations we have? We have assignment and increment, right? So whose precedence is more, assignment or increment? Whose precedence is more? Tell me, whose precedence is more? Unary operator's precedence is more, so increment's precedence is more. So first what we do? First we do the incrementation, right? तो incrementation के साथ यहाँ पे value use भी हुआ है, so ये आएगा, है ना? ये आएगा. तो incrementation के साथ utilization आएगा. So how do we increment? Increment के लिए I told you, the code is INR. Why? Next क्या है? Utilization. How do you use a variable? By reading it, right? तो load को क्या लिखते हैं हम लोग? Load. So we say load, so 1 by value will be loaded, and then next is store. So load को L लिखते हैं ना. So we say store 1 x. Could you understand this? ये मैंने first class बताया था. So first the value will be incremented, y's value will be incremented, then it will be stored to the CPU registered, because how do we assignment? We first read, then we write. So we read the value of y, then we write it to x. Clear? इतना तक समझ में आया सबको जो मैंने कोड्स जनरेट किए हैं?
Okay, now let's execute it. So when you execute it, the very first thing that is getting executed is INRY. So this is 1. In 1, what happens? This 10 gets incremented to 11. Okay, then load 1Y. So this value goes to this. Here, and what we get here? We get 10. Then store. So this value gets stored to X, and how much we get? 11. So at the end of this, if I try to print the values of X and Y, what I'm going to get? I say printf. Sorry. This is 11. Okay. So now what is the value we are going to get? We get X equal to 11, Y equal to 11. This is clear without. देवाशीष चन्ना अपने वीडियो ऑफ करो बेटा. Now next is when we are generating for this. So here what happens, see, here similarly first is क्या है? वही incrementation है, but यहाँ पे it is first utilization then incrementation. Okay, this is first utilization then incrementation. So what is the first statement that I'll write? First utilization, मैंने first load हो जाएगा मेरे. Okay, उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं that when it's a pre-increment, first incrementation, then assignment. When it's a post-increment, first assignment, then incrementation. But see, assignment always have a lower priority over incrementation. तो पहले incrementation ही होता है, फिर क्यों नहीं affected होता है? ये तो हमें पता है कि नहीं होता है. But why that is here? The reason is here. Next, what we'll do? I'll do the implementation. Sorry. Next, I will do the implementation. So I'll say INR Y. Okay. Then क्या करना है? Store करना है. तो we say store 1x. समझ में आया? Now, next what I will do? I'll try to print the value. Now let's run this. So when we run this, again first is what? Load y. तो ये आ जाएगा 1. This is 1. Okay. Now this will hold how much? 10. Next is INR. So this will be how much? 11. This is statement number 2. And then whatever is there in X, this in 1 will be stored to X. This is 3. Okay, like this is 2. This is 3. Got it? So how much you are going to get in X? We are going to get 10 in X. And what is the value of Y? Y is 11. Do you understand what is the basic difference? In the first case, it is actually in both the cases it is incrementing, but in case of pre it is putting the incremented result, whereas in case of post, as it reads the existing value first it reads, then only it will write. Understood? Is it clear to everybody? Anybody having doubt, please ask now. Okay, now we will see something else. For that, I'll again draw the boxes and we will see the other next example that we are doing.
utilization माने how do you are reading the value, how do you use a value without reading. So when we read a value to print, to assign, to increment, to maybe add, subtract, anything, when you read a value, that is called utilization. Sanjay, now box part. So what happens in case of pre-increment, Dipankar, Mukund, you can see here, in case of pre-increment, first is incrementation, first INR Y, 10. So it got incremented to 11. Got it? Now, the value is 11. This 11 will be stored to where? The register, that is load 1Y. So what value is getting stored after incrementation? When you are doing, what is the new value of Y? 11. So it will be storing how much? 11. Now whatever is stored in the register, from there it goes to the memory, that is 11. जैसे मुकुंद और दीपंकर, आप दोनों एक चीज देखो, सपोज आपके पापा ने ना आपको 10,000 रुपीज दिया, ठीक है, फॉर डिपॉजिटिंग इन द बैंक, ठीक है. Then he has given you two jobs. One is to deposit this money, second is to get the account balance. Fine, ये उनको लेना था. तो आप जब बैंक जाते हो, there are two operators who are sitting here. This is the pre-operator, this is a post-operator. अगर आप इनके पास जाते हो, उनको पूछ देते हो, अपना 10,000 रुपीज दे देते हो, okay? Now देने के बाद what you are doing, you are telling him that please deposit this and tell me the account balance, okay? So if he is a pre-increment officer, ये आपका account balance है. Account balance, account में suppose you have थोड़ा ज्यादा 5 lakh, ठीक है. अकाउंट में सपोज यू हैव 5 lakh. नाउ इफ इज अ प्री इंक्रीमेंट ऑफिसर, ही विल फर्स्ट मेक इट 5,10,000. समझे? ही विल फर्स्ट मेक इट 5,10,000. ये बना देंगे. गॉट इट? ये बना देंगे. ये बनाने के बाद देन व्हाट ही विल डू, ही विल फर्स्ट इंक्रीमेंट, सुन रहे हो, फर्स्ट इंक्रीमेंट, देन इन अ पीस ऑफ पेपर, ये पीस ऑफ पेपर अपना रजिस्टर है, इसमें उन्हें वो लिख देंगे. कितना लिख देंगे? 5,10,000. एंड दिस स्लिप इज गोइंग टू गिव इट बैक टू यू. तो आपको कितना मिला? 5,01,000. इतना तक समझ में आया आप दोनों को? दीपांकर? ओके. नाउ सी, इफ आई गो टू द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफिसर, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफिसर, तो ये क्या करेंगे? पहले जो पीस ऑफ पेपर था ना, जो आपको रिटर्न करेंगे, उसमें उन्होंने एक्जिस्टिंग बैलेंस को लिख दिया, दैट इज 5 लाख. ओके, लिख दिया. उसके बाद उन्होंने पैसा डाला, सो दिस अकाउंट हैज बिकम 5,10,000. नाउ ही हैज रिटर्न यू बैक द स्लिप. तो स्लिप में कौन सा डेटा है? 10,000 तो रिफ्लेक्ट ही नहीं किया है. यूटिलाइजेशन को समझ में आया अभी? What do we mean by utilization? Dipankar, could you understand? ना, ये पूछ रहा था. कौन पूछ रहा था? मुकुंद पूछ रहा था. ठीक है. I think people who did not ask but had doubt, it should be clear. Yes. Now we will change the thing a little, and then we will see what is happening here. क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये जैसे ये हमारा x है, कहाँ गया रे? ये x है, ये y है, ये रजिस्टर है, ये x है, ये y है, ये रजिस्टर है. Now suppose I will change the code. तो कोड चेंज करके हमने क्या किया? तो हमने क्या देखा? It's first incrementing, then actually assigning. तो let's break it. Like first incrementation, तो हमने दो स्टेटमेंट्स को कर दिया. ये एक स्टेटमेंट कर दिया, दूसरा स्टेटमेंट कर दिया x equal to y. Okay, I've just broken it into two parts. Fine. ये आपका स्टेटमेंट 1, ये आपका स्टेटमेंट 2. Okay. And the same thing we are doing this side, where
we are writing x equal to this is y plus plus, and we are doing x equal to y. Okay, ये हमने किया. Now what will be the code that will get generated in this case? In this case पहले one इसका code generate होगा, ठीक है, incrementation. So I'll just write INR y. Do I need to utilize it? If you want, you can write the statement, but it is actually not needed because the first statement we are actually not using the value of y. We are simply incrementing. Using समझते हो? आप print plus plus y करोगे. So you are using it to print plus plus y. You are using it for assignment. But in this case, we are simply incrementing. हम लोग कोई assign कर ही नहीं रहा है. But still then, अगर आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको. This is load 1. y. ठीक है. उसके बाद statement 2. 2 में क्या करेगा? Assignment. Assignment कैसे करते हैं? Read करते हैं, write करते हैं. तो ये फिर से इसको पढ़ेगा, फिर write करेगा. Would you understand the code? Increment decrement operators में pre and post में difference is a very common question. इस तरीके से कभी समझाने का कोशिश करें. Instead of you telling this is first incremented, then that is first then incremented, is it is that नहीं करके try explaining one using the reason why it is happening and what is the difference actually. Is this clear? The codes that I have generated, is this codes clear with everybody? तुम लोग सुन रहे हो कि you are busy with something else? Tell me. If you are not interested, we can stop the class. No problem. ये 4-5 जन एक सिस्टम से मिलकर क्यों देख रहे हैं? Line number 2.1, Rehan. When we do an assignment, see in this case there are two different statements. So one read cannot be, or one load statement cannot be carried over to the next one. You know. So every statement is processed one time. Okay. So when we process the statement one time, that means what we need to do, you need to read and then you need to write. So that is why I'm reading the value of y and assigning it to x. X equal to x plus plus हम लोग करेंगे रुपेश, don't worry. One ly y done after 2l1. माने दो बार क्यों लोड हो रहा है वही पूछ रहे हो तो? अरे दो स्टेटमेंट है ना. फॉर दिस स्टेटमेंट दिस इज एक्चुअली दिस इज इंक्रीमेंटेशन. खाली INR होना चाहिए, बट मैंने यूटिलाइजेशन भी लिखा है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग इसको दिखा रहे हैं. दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. डू यू अंडरस्टैंड? INR मैंने सिंपली वो इंक्रीमेंट करेगा. हम इसको काट देते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं. फॉर फर्स्ट इट शुड बी डन फर्स्ट, देन नो. फर्स्ट में इट्स अ सिंगल स्टेटमेंट. So you are incrementing as well as assigning. So first में भी तो वही कर रहे हैं ना, INR y कर रहे हैं, L1 y कर रहे हैं. क्या गलत, अलग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? We're doing the same thing here also. Okay. Now what happens in this case? Isn't it the same? INR y फर्स्ट यूटिलाइजेशन करने से पहले एक लोड करोगे, फिर नहीं प्रत्युष, इट विल नॉट लोड स्टोर इंक्रीमेंटेशन. तब से वही समझा रहे हैं कि इंक्रीमेंटेशन हैज गॉट अ हायर प्रायोरिटी इन दिस केस. यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इंक्रीमेंटेशन है, सो यू कैन राइट इट. लाइन नंबर 2.2, whatever is the value stored in y, we are trying to store it into x. आयुषी x equal to y कैसे लिखते हैं? ये कैसे लिखते हैं? Read y, write to x, है ना?
So I'm reading y and writing to x. Got it? Now let's execute. ओ मैंने load लिखा था so that you could understand what is happening. वो कंफ्यूज हो रहे थे तुम लोग, इसलिए हमने उसको काट दिया. ठीक है. एक्चुअली as it is a new statement, a fresh read will be done. ठीक है. तो एक काम करती हूँ मैं, एक्चुअली ये है नहीं, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, सो दैट आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए. अदरवाइज ना यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि क्यों हमने लिखा इसको. दिस इज एक्चुअली फर्स्ट यूटिलाइजेशन, देन इंप्लीमेंटेशन, देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है. इसलिए मैंने 1.1 1.2 लिखा है क्योंकि 1 का ये दो स्टेटमेंट, 2 का ये दो स्टेटमेंट. ठीक. अच्छा, अब रन करते हैं. So when we run it, what we get? The value of y is 10. The value of y is 10 here. Now we say INR y. ध्यान से देखें. INR y. This is 1.1. What is the value? What the value becomes? 11. Then we say load 1 y. This is 1.2. So what value you get? 11. Now statement number 1 is completed. समझ में आ रहा है? Now going to statement number 2, x equal to y. Two different statements. Please do understand. X equal to y. So when you write x equal to y, one will read y and store it to x. Okay. So the next is load 1 y. So again, the value will be loaded as a result of the statement 2.1. So this is how much? 11. Now store. How much it to store? 11. समझ में आया? What happens in the other case? In this case, load 1 y. पहले utilization, तो पहले load 1.1. How much you get? 10. Then 1.2, it gets incremented to 11. Then this value is loaded here. How much you get here? 11. So the 10 gets overwritten by 11. Okay. Now we again, this part is completed. है ना? अब हम इसके बारे में जाएंगे. x equal to y. So this is load y to a register, store the file. तो फिर से लोड करेगा. फिर से लोड करने से अभी कितना लोड कर रहा है? 11 लोड कर रहा है. अब इसको स्टोर करेगा. So this is as a result of 2.1, 2.2, you get 11. So in this case also, the value of x equal to 11, y equal to 11, and here also it is x equal to 11, y equal to 11. समझ में आया? So इसको बोलते हैं stand alone implementation. ये जो है ना, इसे बोलते हैं stand alone. Okay, ये this is stand alone. माने only increment, only decrement, और कुछ नहीं है. In standalone operations, there is no difference between pre and post operation. क्योंकि देखो, I mean, इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है और कब हो रहा है? इफेक्ट तब हो रहा है जब वैल्यू आप असाइन करते हो. अरे 2 टाइम्स ओल्ड नहीं हो रहा है बाबू. और तुमको ये इसमें डिफरेंस क्यों दिखाने के लिए हमने किया था. ये एक्चुअली नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज द लोड स्टेटमेंट इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज टोटली, इसलिए उसको ऑप्टिमाइजर ही उड़ा देगा. ये स्टेटमेंट नहीं होगा.
प्लस प्लस वाई में लोड क्यों हो रहा है, उसमें तो इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, देन आफ्टर एक्स वैल्यू तब लोड होगा। एग्जैक्टली ये तब होगा, लेकिन हम लोग जो ये सीक्वेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखाए थे उसी का एक्सट्रापोलेट करके समझाने के लिए हमने इसको लिया है, समझे। Would you understand now, Om Prakash? Just to show that in this format I have taken two loads, but see this load is not actually getting used, so optimizer anyway is going to take it out. Om Prakash, could you understand? So is it clear with all of you why what is the difference between the pre and post operation and why this happens internally, what is the reason it happens? Okay, you can take your notes jaldi lo and we'll move to the next one. Operations, we will understand how this works first. Is it finished? Should I move on to the new slide? वन नोट मेरा पूरा हुआ नहीं है, वन नोट का रह जाता था. Here we need to do it. Any difference in working in C, C++? No, but Java a little difference is there. Acha. This is a single one. Okay. Now see, this is an operator where in expression you see it in a different way. I mean, it works differently. Okay. So let's first do this. I'm writing printf. Percentile D, percentile D, percentile D, percentile D. Plus plus x, x plus plus, x plus plus, plus plus x, x plus plus.
the value of x we take as 10. आउटपुट बताएं, जो बताएगा उसका रीजन भी बताएगा. सो कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पूछ के डोंट ट्राई दैट. Well, should I show you the output once I run it? There are 5 percentile Ds, means it will write 5 answers, isn't it? Did I share the screen? No. हाँ. Can you see the output? फिर से run करती हूँ. This is 15, 13, 12, 15, 10. Now the question comes how? Okay, how the answer is like that. Now, first of all, tell me whether you are solving it from right to left or left to right. How you are doing it? Left to right? Okay, stop it. I'll come back to this. First, let me explain something to you. Now, see, when we talk about the programming languages, whenever we pass any functions, pass any arguments to the functions, okay? Now, C, C++ like languages stores the arguments passed to function in a stack. Okay. So they are processed from right to left. Okay. This is called C calling convention. So what happens if I'm making a call to a function, say fun or func1, the function, I'm passing here A, B, C, D. Okay, like this I'm passing. In this case, what it will do, it will create a stack of items, right? It will create a stack. So how it will create a stack? It will first, to the fun stack, it will, let me draw it. So this is the stack that is created. Into the stack, it is passing first A.
then B, then C, then D. Okay, so first one to be popped out, D. Which is the next one? C, then B, then A. Got it? So this will be processed from right to left. Similarly, whenever you are writing this printf, you will be first, what is past? Plus plus x. ये पहले जाएगा, फिर x ये उसके बाद जाएगा, फिर x plus plus, फिर plus plus x, फिर x plus plus. So which one will be done first? This one will be done first. इसको बोलते हैं C calling convention. Could you all understand? Okay. Now how printing is done? So that means this will be processed this way. But how it will print? Printing will be only this portion. Okay. So this is left to right. But calculation is from right to left. Got it? So what it will do? It is passing how much? Let me check. So it is passing how much? 10. Fine. This is a post increment. Now see, post increment does an immediate operation. समझे? रीड कर लेता है, इंक्रीमेंट करता है, रीड कर लेता है, इंक्रीमेंट करता है. प्री क्या करता है? यूटिलाइज तब कर सकता है जब सारे इंक्रीमेंटेशन हो गए हैं. समझ में आया? क्लियरली सुना क्या बोला मैंने? पोस्ट में यू विल रीड योर इंक्रीमेंट, यू विल रीड योर इंक्रीमेंट. इन प्री यू कंप्लीट इंक्रीमेंटेशन, देन ओनली यू आर रीडिंग. समझे? So here what is this? Is a post, right? So when this is a post operation, what we are doing, we are having here reading 10. So this value 10 is printed. Okay. What is the value that you input here? 11. Fine. Now pre-incrementation makes the value as 12. It makes the value 12, but you cannot read because till now incrementations are not completed. Do you understand? Now again, this is 12. So this is post incrementation. So this reads 12 and makes it how much? 13. Okay. This is again post. Sorry. This is again post. It reads 14 and makes it, sorry, reads 13, makes it 14. Now pre is 14, how much? 15. Now incrementations are completed. Now we can read. So now when we can read, what is the current value? 15. So this will read 15. This will read 15. समझ में आया? प्री फ्लो में प्रिंट होगा, पोस्ट सॉरी गलत बोलती, पोस्ट फ्लो में प्रिंट होगा. प्री सारा इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन खत्म होगा तब जाके प्रिंट होगा. तो आप क्या करना, पूरा फ्लो में ऑपरेशंस कर देना, लास्ट आउटपुट निकलेगा उसको डालना. ये आउटपुट अलग अलग आता है. हम लोग का नॉर्मली क्वेश्चन तो सी बेस्ड आता है, तो कोई भी सी कंपाइलर में रन करो, ये आउटपुट आएगा. कोई भी. तुम जावा में करो, कुछ और आएगा. जावा में आई थिंक इट शुड कम एज ये इंटरमीडिएटली आएगा. लाइक बीच वाला आपका आना चाहिए 10, 11, 12, 12, 12, 13, 15. ये वाला करेक्ट है बिकॉज सी में यही आता है. कोड नॉर्मली सी बेस्ड होता है. इसका एक्चुअली एक आंसर कंपाइलर डिपेंडेंट होता है. अगर वो दिया है तो वही आंसर है, अगर वो नहीं दिया है तो सी वाला आंसर है, बिकॉज दीज आर सी बेस्ड क्वेश्चंस. पोस्ट में कंटिन्यूअस फ्लो होता है. देखो फिर से करते हैं. That is because of when data after reading based on the compilers. Now see how post and pre. आकाश देखो, और एक कोई भी पूछ रहा था for a repeated explanation.
पोस्ट क्या करता है, इट रीड्स इमीडिएटली, यू कैन, सो जो इमीडिएट रीड करेगा, अगर आपके पास वैल्यू आ गया तब जाके आप पास करोगे ना, जो प्रिंटर है उसको, जब तक वैल्यू रीड नहीं कर पाते तब तक पास नहीं कर पाओगे, समझ में आया। पोस्ट क्या करता है, पहले ही रीड कर देता है, ठीक है, हाँ, दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू। पोस्ट डज द इमीडिएट operations reflection, whereas pre is after the end, whatever is the value that will be put in every pre. So now say this is x plus plus, so this will read 10 and अच्छा, ये मैं काम करती हूँ, let me make the variable here, ठीक है, ये वेरिएबल x है मेरा, तो 10 है, तो x ने 10 रीड किया, इसको 11, ठीक है, इसको 11 बनाया। नाउ when you go here, Sohan, when I'm telling it is varying from compiler to compiler, I'm explaining C. Why you people are again showing me C++ में ये आ रहा है, Java में वो आ रहा है, हम तो बोल रहे हैं अलग आएगा, हम कौन सा बोल रहे हैं सेम आएगा। So this 10 is 11, समझ में आया। तो ये 10 जो है, ये 10 रीड किया और 11 डाला, ठीक है। People who wanted a repetition, please be attentive. So now when this it goes here, this is a pre-incrementation, ये क्या करेगा बताओ, इंक्रीमेंट करेगा, तो ऑल INR खत्म होने के बाद ही इसका लोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, समझे। तो इसका जो एक INR है ये क्या बना देगा, 12, तो जब इस तरफ आता है तो वैल्यू क्या लेके आ रहा है, 12 लेके आ रहा है, ओके, 12 लेके आ रहा है। सो नाउ दिस 12 x प्लस प्लस दिस इज पोस्ट, तो ये क्या करेगा, इमीडिएट रीडिंग करेगा 12 का, फिर 12 को क्या बना देगा, 13, फिर इधर आते हैं हम लोग, this is again post, so we read how much, 13 and the value becomes how much, 14, तो ये जब इस तरफ जाता है 14 लेकर जाता है, pre incrementation making it how much, 15. Now see all INR have got executed or not, हमने pre में क्या पढ़ा था, first INR, right, first incrementation, INR complete होगा फिर जाके लोड हो सकता है। So as INR is yet to be completed, वो नहीं पढ़ पा रहा था ना, all INRs are completed, so all load will be executed, okay, सारे लोड एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहला लोड किसका है, इसका लोड बाकी है, तो ये क्या रीड करेगा, करंट वैल्यू क्या है 15, इसका लोड बाकी है 15, समझ में आया। देखोगे सारे ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं इसमें। नेट गया क्या, क्या नेट चला गया शायद, एनीवेज डजंट मैटर, आने के बाद और एक बार कर देंगे। अच्छा, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा करके रखा था, in post as it is first utilization it can read the value, but in pre as it is first incrementation till all are finished it is not able to read, so it reads only the final value, ठीक। अच्छा, अब आगे आगे एग्जांपल्स करेंगे, ये तो हो गया। For same x equal to 10, can we solve this? अब तो सबको आराम से करना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
वो ये कर देती हूँ मैं। कैसे होगा? ये 10 जाता है, समझे? ये आपका वेरिएबल है, कौन? ए। अच्छा, यहाँ पे x हो गया, sorry। हाँ, ये वेरिएबल है ए। ओके, नाउ ए का इनिशियल वैल्यू कितना दिया है? 10। बहुत लोग गलत लिख रहे हैं। 10 है, डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू क्या बनेगा? 9। अभी प्रिंट नहीं आएगा, राइट? ए प्लस प्लस, तो जब इधर जा रहा है तो कैरी वैल्यू, वैल्यू अभी रिसेंट वैल्यू क्या लेके जा रहा है? 9 लेके जा रहा है। ए प्लस प्लस ये क्या रीड करेगा? 9। फिर वैल्यू को क्या बनाएगा? 10। फिर इस तरफ जो जा रहा है ये कितना जा रहा है? 10 जा रहा है। प्लस प्लस से विल मेक इट हाउ मच? 11। समझे? नाउ ऑल loads will be executed, so one load is here, one load is here, so it should be 11 9 11। कितने लोगों ने 11 9 10 दिया है आंसर? बहुत लोगों ने। Could you understand? जितने लोगों का अलग था? Many people have done it 10 9 and 11 9 10। It will not print it because this is a pre। पूरा ऑपरेशन खत्म करोगे, लास्ट रिजल्ट जितना प्री होगा सब में डाल दोगे, और एक करोगे क्या? की हुआ? विल यू डू वन मोर? अच्छा ठीक है, देते हैं देते हैं देते हैं। गुड। जिशान और एक बार करो। सब ठीक किया, लास्ट वैल्यू मैंने फर्स्ट वैल्यू गलत कर दी। मुकुंद, फाइनल वैल्यू तुझे कौन पूछ रहा है? यहाँ पे 5% डी लिखा है, 5 आउटपुट आएगा। तब से पहला क्वेश्चन से तो फाइनल वैल्यू लिखा जा रहा है। When there are 5% डी, the output will be 5 आंसर्स। तो लास्ट आंसर देगा तो कैसे होगा? करण राज और एक बार करो। खाली करण राज नहीं, इतने बहुत लोग हैं यहाँ पे। हाँ, विश्व प्रकाश, साक्षी, विवेक, आद्यासा, प्रच्युत, अनुभव। बहुत लोगों का आंसर गलत है। अरे इसमें करना क्या है? Which screen is visible to you? Whiteboard। ये देखो,
दिस इज द वेरिएबल ए, वैल्यू क्या है 10, माइनस माइनस ए मेक्स इट हाउ मच 9। तो इस तरफ जब जाता है तो 9 लेकर जाता है पोस्ट, तो ये क्या प्रिंट करेगा 9, वैल्यू क्या बनाएगा 8। इस तरफ जाता है 8 पोस्ट है तो 8, वैल्यू क्या बनाएगा 9, प्री है 9 को क्या बनाएगा 10। ओके, फिर इस तरफ चला जाएगा 10 को a माइनस माइनस, so it will read how much, it will read 10, then made the value how much, made the value 9, समझे, made the value 9। तो ये जो प्लस प्लस है इसमें फाइनल वैल्यू आएगा कितना है 9, so this is 9, this is 9। देखो हाँ रहा है कि नहीं, देखा। 9 9 8 9 10, हाँ 9 9 8 9 10 कहाँ पे हुआ, दिस इज 10 9 8 9 9, प्रिंटिंग कहाँ से होगा, प्रिंटिंग तो लेफ्ट टू राइट होगा ना वरुण, प्रिंटिंग किसको करता है, ये तो इससे प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग प्रिंट होगा लेफ्ट टू राइट। आपका कैलकुलेशंस विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, प्रिंटिंग इज लेफ्ट टू राइट, समझे। ओके, सो ये हो गया एक्सप्रेशंस का। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज आई वांट टू डू वन इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन ऐसे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हाउ टू डू दिस। अब एक करते हैं, a is equal to 3, now a is equal to 3, I want to print I say a equal to plus plus a plus a plus plus, what is the value of a, 8 होगा, कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो ये वैल्यू कितना 3 रीड करता है, इस तरफ जाके कितना 4 बनता है, 4 प्लस प्लस होने से कितना बनता है 5, ऑल इंक्रीमेंट्स डन, तो दिस इज 5 ना, सॉरी प्लस प्लस ए लिखा है, प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस ये लिखा है, तो प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस, so in this case this is going to read 3, the value becomes 4, then 5, नहीं ये लेफ्ट टू राइट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सो दिस इज ओ हो हाँ सॉरी सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी,
दिस इज एक्सप्रेशन राइट, ए प्लस 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 है, तो ये आपका लेफ्ट टू राइट होगा बिकॉज प्लस ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, प्लस ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट। नहीं 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 नहीं, सुनो बात सुनो, इसको ना पहले हम लोग ऐसे करते हैं, ये जो चीज है इसको पहले हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, अरे नहीं बाबू वो उल्टा हो गया था, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, हमने क्या लिया था क्वेश्चन, प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस राइट। तो नाउ सी दिस इज एन एक्सप्रेशन, अब इस पे लेफ्ट कौन सा है, राइट, राइट टू लेफ्ट कौन डिसाइड करेगा, जो ऑपरेटर है वो डिसाइड करेगा। व्हाट इज ऑपरेटर, प्लस कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट, सो दिस इज प्लस प्लस ए। ठीक है, तो ये अगर ए है, ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, तो ये रीड नहीं किया अभी, गॉट इट, रीड नहीं किया अभी, उस तरफ चला जाता है, उस तरफ जाने के बाद ए प्लस प्लस, तो वैल्यू कितना रीड करता है, 4, फिर वैल्यू को बनना कितना देता है, 5, ऑल इंक्रीमेंट्स कंप्लीट, इस तरफ 5 रीड होगा, सो दिस इज 5 प्लस 4 दैट इज 9, 9 इज द आउटपुट। यस आयुष, समझ में आया 9 कैसे हुआ, और एक बार देखो, कौन पूछ रहा था, और एक बार, जितने लोग और एक बार बोल रहे हो देखो, this is from left to right. Okay, why left to right, because plus operator is working here, plus works from what, left to right, इतना समझ में आया। उसके बाद जितने लोग रिपीट बोल रहे हो, प्लस वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में व्हाट इज द वैल्यू दैट इज गेटिंग इनपुट 3 incrementation, right, so this will make the value of 3 as 4 but it will not be able to read anything for this, got it। तो यहाँ पे आपका एक लोड ऑपरेशन जो है वो पेंडिंग रहा, ये पेंडिंग ऑपरेशन है, समझे। अच्छा, नाउ दिस इज ए प्लस प्लस, इनपुट कितना लेगा, 4 लेगा, ए का वैल्यू 4 है, इट विल रीड हाउ मच, 4, मेक द वैल्यू हाउ मच, 5। ओके, now there is a, now all the INRs are complete, there is one load operation remaining, so how much it will read, 5, so this is 5 plus 4, what is the result, 9। अगर यहाँ पे हम लोग लिखें सेम, a इक्वल टू, इस तरफ लिखते हैं, हाँ, a इक्वल टू 3, और हमने यहाँ पे लिखा printf परसेंटाइल d प्लस प्लस a प्लस 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 a, बताओ।
अच्छा एक बात बताओ, ये हुआ कि नहीं हुआ? कैसे करेंगे इसको? ये देखिए, so this way, how much is the input? 3. It makes it how much? 4. Can't read. How much is the input here? 4. It makes it how much? 5. Now it is over, so it will read 5 plus 5, that is 10. Okay, Dipankar, plus a plus a plus plus. So when you write plus a plus a plus plus, what is the value of a that we have taken as? We have taken the value as 3. Plus a will make it 4, but it cannot read. Then a plus plus will read how much? It will read 4, make it 5. What is the final value? 5. 5 plus 4 equal to 9. समझ में आया? दीपंकर समझ में आया? हाँ, सृष्टि क्या प्रॉब्लम हुआ तुम्हें? क्या नहीं समझ में आया? 2 प्री इंक्रीमेंटेशन है, तो आप पूरा प्री इंक्रीमेंटेशन खत्म करोगी लेफ्ट टू राइट, तो ये प्री इंक्रीमेंटेशन 3 को 4 बनाता है, ये इंक्रीमेंटेशन 4 को 5 बनाता है, फिर फाइनली दोनों में 5 रिफ्लेक्ट होंगे। 5 प्लस 5 कितना आएगा? 10। ओके, अच्छा अब ये बताओ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट x प्लस 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 y टू बी इंटरप्रेटेड? इसको दो वे से पढ़ सकते हैं। वन इज x प्लस 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 वाई, दूसरा है x प्लस 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 वाई। साक्षी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बट रीजन रॉन्ग है। नो दिग्विजय, प्रेसिडेंस का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। पढ़ेगा पहले, फिर बाद में प्रेसिडेंस निकालेगा ना। तो ऑपरेटर के साथ अटैच करता है, ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर। सुनो, प्रेसिडेंस में ऑपरेटर के साथ ऑपरेंड अटैच होता है। आंसर इज द फर्स्ट वन। आंसर इज द फर्स्ट वन। व्हाट इज द रीजन? इसे बोलते हैं ना मैक्सिमल मंच रूल। What C++ uses maximal munch rule. ये उसका आंसर है। मैक्सिमल मंच रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस को सबसे पहले पढ़ेगा। Got it? That means where they find the longest valid token from left to right and use. So left to right, whatever is the longest one that it can understand, it will put it. इसको मैक्सिमल मंच बोलते हैं और लॉन्गेस्ट मैच भी बोलते हैं। नो 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 नो, C++ में सेम आएगा। This is called longest match.
सेम है। जावा में करके देखना क्या ले रहा है, C++ में काम कर रहा है। ओके, समझ में आया? जावा में भी वही, that is the way it actually works, because it should go always for the longest subsequence. Clear? Should we move ahead to the other part? अच्छा, मिक्स करके देने से आंसर कर पाओगे? जैसे सपोज हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15, b equal to 13. Okay, now I'll say that c equal to plus a plus a plus 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 b. करो तो, ए बी सी तीनों प्रिंट करना है, ठीक है? You need to print A, B, C all. ए बी का तो कोई सोचने का मन ये ही नहीं है, क्यों? बिकॉज A will be incremented, B will be incremented, right? So this will read this. How much it will read? 10. The value become 11. Plus B. It will make the value of 13 as how much? Sorry. This will be made as 14. So this will be read as 14 also. Samjhe? So this is equal to how much? 24. So what is the value of A after that? A is 11. B is how much? 14. C is how much? 24. So this is the output. ठीक है? So I hope you all are clear now. With increment decrement operator अब गलती कभी नहीं होगा. Okay. So now let's go to the remaining of the unary operators. So what are the operators that we have discussed till now? We have discussed positive, plus plus, minus minus. Then we have discussed complement, not. ये हमने डिस्कस कर लिया. ठीक, बचा क्या हमारा? एक था एड्रेस ऑफ, एक था वैल्यू आर्ट. ये हम लोग पॉइंटर में पढ़ेंगे, ठीक है? वी विल डिस्कस इट इन पॉइंटर्स. अच्छा, नेक्स्ट था आपका साइज ऑफ और एक था टाइप कास्ट. ये दोनों अभी पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट कम्स द साइज ऑफ ऑपरेटर. ओके, फर्स्ट कम्स द साइज ऑफ ऑपरेटर.
It looks like a function, but actually is an operator that returns the memory requirement of the operand. Okay. Now, operand can be a data type, or it can be any you can say variable, or it can be constant. Okay, it can be a data type or variable or constant. Now, how we can take the example in 3 cases here. Okay, 3 we take the example. First we take character, integer, float. तीनों में लेंगे examples. Okay. So now first we take up the character type. Now we say char ch equal to a. Okay, this is one. Now we are printing size of char. This is the data type. Okay. Write size of ch. We can write size of a. ये एक है. Okay. इनका आंसर करना है. Similarly, we'll do it for integer, that is int x 10. Then this is size of int, size of x, size of 10. सृष्टि, I know we have implemented, लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाहती थी यहाँ पे. There is a reason why I'm covering this. Now please give the output for characters. Like if it is 1 1 1 for each, you can write 1 1 1. Then integer you'll write whatever you write. Float you'll write. 3 लाइन में लिखना. समझे? Okay, 1 byte for all chars, 4 byte for ints. Then
जल्दी करो, कितने टाइम लेते हो आंसर देने के लिए? लोगों ने रन करना शुरू कर दिया, आंसर बता रहा है, देखो। I've taken a character variable, okay, now see the output. यहाँ पे देखो, ये इधर 114 it is showing, okay, it is showing 114. Now why it is 114? Srishti, this is the reason I wanted to discuss. The output is coming here 1, coming here 1, but coming here 4. But do you think actually size of A is 4? अगर 4 होता तो इसके अंदर घुस कैसे रहा है? That is because this A, when you're writing, it is translated to what? 65. 65 is what? Integer. The size of misinterprets (65) to be integer. समझे? So this is a malfunctioning that is happening. Could you understand? Yes, number of bytes. Similarly, integer there is no problem. 16-bit or 32-bit. 16-bit होने से 222, 32-bit होने से it is 444. Okay. Size of float x and 10. Size of float is 4. Size of x is 4. Whereas size of 10 is 8 because this is a double value. Okay. Next, typecast. Now, typecast can be implicit. तो मैंने कितना लिखा है ज्योतिदित्य? साइज ऑफ 10.0 क्यों लेगा? आपने तो 10 लिखा है. 10 is an integer constant. 10.0 थोड़ी ना लिखा है. One is 10, the other is 10.0. Size of 10 is 444. It's an integer constant. So this is implicit. There. So it can be implicit. Implicit कब होता है? On assignments. और expressions. आयुष्मान 10 लिखा था कि 10.0 लिखा था कि 10.5 लिखा था? 10 लिखने से कैसे आएगा तुम्हारा 8? 10 फ्लोट है क्या? 10 तो इंटीजर है ना, तो 4 ही तो आएगा. Why size of 10 is fit for malfunctioning? 10 is an integer constant. It is showing 4 bytes. So why it is malfunctioning, do you think? It's a correct output. बोर्ड पे 8 लिखी हूं मैं 10.5 का. वो मैंने वो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरा. This is 10.5.
इसके अंदर ये 10 लिखा था तो दिस मच वन शुड मेक आउट द फ्लोट के नीचे लिखा है. एक्सप्लेनेशन उसके नीचे लिखा है, इसमें तुमको दिख रहा है शायद ना, that a का ASCII value 65 है, it is missplitting 65 to be integer and taking it as 4 bytes. बोर्ड में लिखा है देखो. तो सपोज वी int x equal to 5, float y equal to 3.5. If I write x equal to y or I write y equal to x, these are all implicit typecasting. Explicit was if you do it using operator, like x is an integer, so I write x equal to int y or y equal to float x. Here the behavior is guaranteed, here it is compiler dependent. Okay. Similarly, this typecasting can again be divided into two, like it can be upward casting, it can be downward casting. Now, upward casting कैसे होगा? Upward casting is like we convert from integer to float. Like we said, ये उल्टा लिखा. हाँ ठीक है. So we write y equal to x or y equal to float x. In this case, the integer value is upcasted. Okay, this is higher type. Conversion to higher type. And this is conversion to lower type. This is x equal to y, x equal to integer y. Okay. Always remember values are casted, variables are not casted. Casts values from one type to other. Okay. कोई अपकास्ट नहीं हो रहा है, आयुष मैल फंक्शनिंग हो रहा है. वो एक को 65 जो निकल रहा है ना, 65 को इंटीजर सोच के आंसर दे रहा है. अपकास्टिंग कुछ नहीं हो रहा है. कन्वर्शन थोड़ी ना. कन्वर्शन डाटा टाइप कन्वर्शन कब होता है? असाइनमेंट करो, एक्सप्रेशंस में लिखो a प्लस बी, हाँ तब होता है.
Have you done taking notes? Then we'll move on to the next. Okay. Acha. Now the last one is comma हमने तो discuss कर लिया है. The last operator that is ternary. Let me type it. Easier. Ternary or conditional. They take 3 operands. Okay. It's very similar to if else, right? It is similar to if else. Like we say, what is the, how do we write here? We say expression, question mark, expression true, colon, expression false. ऐसे इसको if else में कैसे लिखेंगे? We can write if expression, then expression true, else false. ठीक है? They are the similar things, but there is a difference. क्या क्या difference है? If in if else, if can be or else can be associated with multiple statements. Block लिख सकते हैं हम लोग, है ना? Whereas the entire conditional statement is a single, entire conditional statement is a single statement. Okay. Second, for every if, else is optional. But in conditional operation, both ये तो ऑपरेंड है ना, दोनों ऑपरेंड मैंडेटरी है. ट्रू एंड false part are compulsory as they are the part of, as they are two operands. Third, any type of statements can be used with if else. Whereas return statements can't be used with ternary. Okay. Now how it works, this we all know how it works. It's like we write say a result equal to a greater than b question mark a colon b. ऐसे लिख सकते हैं. So how it works? It works like a and a greater than b is evaluated. If it is not equal to 0, when it's true, then this is returned. And if it is equal to 0, then this is returned.
Okay. Now there is a question. Find the largest of three numbers in a single statement. Okay. What is a precondition? Precondition is, suppose three numbers ABC. Precondition is A is not equal to B is not equal to C. Please do it. Very good. Yes, almost everybody is getting it clearly. So how do we do this? We say result equal to, first we check A is greater than B or not. Now say this has got two parts. One is a true part. One is a true part and the other is a false part. So if A is greater than B is true, we check whether A is greater than C or not. If A is greater than C, then A or C. If A is not greater than B, then B is greater than A. So just check whether B is greater than C or not. Then this. Okay. So we come to the end of the discussion for operators. Now जो लोग क्लास कर रहे हो वो लोग अपने दोस्तों को थोड़ा जगा दो, जो लोग सो रहे हैं, अभी टेस्ट होगा. This is the link for the test. Time is 3 minutes.
हाँ तुम स्लाइड चाहते थे ना, किधर गया ये लो। दोस्ती किस दिन काम आएगी अगर इस वक्त दोस्त हेल्प ना करे तो? यही दोस्ती बाद में जब वो लोग रो रहे होंगे तब तुम देखना कितने दोस्त हो तुम लोग। टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, आज एग्जैक्टली 5 मिनट में हम बंद कर देंगे, लेकिन जितना गूगल करना है करो, जो करना है करो।
Last 1 minute remaining. Please submit. Wow, few people have क्वालिफायर क्या है मैं हर क्लास में बताते जा रहे हैं. People have managed to score a zero. I must congratulate them. इसके लिए भी आपको मतलब हुनर की जरूरत होती है. You need to be that talented. Otherwise, how can you score zero in such a easy paper? Talent, अलग तरीके का talent. Srishti, you are asking me question. Unsigned float तो कुछ होता नहीं है आयुष. Signed, unsigned. Long, short, these are qualifiers. These four are qualifiers. Okay. Time up.
Okay, let's discuss. स्टूडेंट से 527 सबमिट किए हैं, 600 कितना, वंडरफुल. क्लास में एब्सेंट, वहां पे प्रेजेंट, तुम लोग शायद जानते नहीं हो, हम लोग प्रोग्रामिंग करके, मैं प्रोग्रामिंग सिखाती हूँ, हम लोग कोडिंग करके, ये कोई मैनुअल इनपुट नहीं हो रहा है. 644 बच्चे हैं, 513 में भी होंगे, कुछ कुछ लोग टेस्ट हो गया तो उसी के लिए रहते हैं, निकल के चले गए, डजेंट मैटर. Okay, let me just share the screen. We'll quickly complete it. So this is the performance. देख रहे हो 644. Which of the following is not supported by a character type? The character data type supports alphanumeric data, any alphabet, any number, any alphabet, alphanumeric you can write. Can you put all symbols? Are all symbols character, first of all? Okay, all symbols are not characters. Nipan, I'll suggest don't do so much of mistake where you change your branch. Type name components are called the dash of data objects, which defines how locations can be used. They are the attributes of the data objects. Example, क्या symbol का? Which symbol is not a character? Delete is not a character. Home is not a character. Alt is not a character. Control is not a character. How many keywords are there in C language? 32. Find a correct C word, C keyword. Go to. I really seriously wonder how people have scored 0. यहाँ पे ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, PQRS दिया हुआ है, ठीक है, R और S में असाइनमेंट हो रहा है, बट वो पूछ PQ ही रहा है, तो RS को तो देखने की भी जरूरत नहीं है, 1 2 होगा आंसर, क्योंकि RS यूज ही नहीं हो रहा है. Which data type is most suitable for storing a number 65,000 in a 32-bit system? 32-bit system माने 18-digit number it can handle, right? So you can say, 10-digit number it can handle. 65,000 comes within short range. Unsigned integer on 16-bit is 65,535. I told you. So this is short. Similarly, what is the range of a float variable? 3.438. ये. Okay. मुझे पता चला many students, 90% students are doing Google. जब गूगल ही कर रहे हो तो गूगल करके देखो आंसर्स. 16-bit कंपाइलर में रेंज ऑफ इंटीजर क्या है, मैंने आपको बताया था, -32,767 to 32,768. नाउ फ्लोट C इक्वल टू 5.0, टेम्परेचर दिया है 0.2F, 9/5 को पैरेंथेसिस में रखा है, दिस इज 0, राइट, दिस इज 0, so the entire result is 0. Nine by 5 is not 0. 9/5 is 1.
sorry, 9 by 5 is 1. Nine by 5 is 1. So it will give you actually 33 होना चाहिए, I think. सी कितना दिया है? 5 दिया है क्या? हाँ, then 5 plus 32 37. Now qualify that may precede character. Character के साथ signed unsigned both लग सकता है. Okay. Done. So that's all for today. We have come to the end of operators. Next, we will start with control statements. Okay, because function is a very important concept. I want to teach it offline. तो और हमारा कितना क्लास रहता है? और 4 क्लास रहेगा ऑनलाइन. उसमें हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स खत्म करेंगे. ठीक है, लूपिंग चल रहा होगा जब ऑफलाइन क्लास रिज्यूम होगा. एंड इन लूपिंग आई विल टेक क्लास टेस्ट्स. आपको पेपर पेन में कोड लिखना है, which marks will be there. ठीक है, प्रत्युष तुमको किसका आंसर चाहिए बताओ. क्वेश्चन बताओ, हम आंसर बताते हैं. आठ नंबर. अच्छा, 16-bit कंपाइलर का रेंज -32,767 to 32,768. Bye everyone.